Hello everyone. I think you know me well. Um, I am your physics educator. My name is Sumit Kumar. लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स पार्ट वन कवर किया था. ओके. तो मैं आपके लिए आज पार्ट टू लेके आया हूँ. पार्ट टू में पार्ट वन में हमने लेंस के बारे में पढ़ा था. लेंस तक हमने कवर किया था. और पार्ट टू में हम लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से स्टार्ट कर रहे हैं. और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेंस का हमने डेरिवेशन कर लिया था. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम इस अभी पढ़ने वाले हैं. एंड देन विल मूव टू प्रिज्म और रेनबो और डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ दैट विल स्टडी इन दिस सेशन टुडे. So, without wasting our time, we'll start ray optics. Okay. रे ऑप्टिक्स में आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि इट्स बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. और रिफ्रैक्शन से ही हमें पढ़ना है. रिफ्लेक्शन इस बार बोर्ड में नहीं है. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन में हमने बेसिक्स कवर किया. देन वी कवर्ड लेंस. देन वी कवर्ड apparent depth. Then we covered refraction through a spherical surface. Then we covered refraction through lens. Now I am moving to the next part is combination of lens. So in combination of lens, we'll see how the lens are combined. But उससे पहले मैं आपके लिए लेंस स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ. What is this important information? चलो देखते हैं क्या है. Before that I'll change my just color of the pen. Now I think you all aware of that कि हमारी उम्मीद टीम जो आपके लिए आपके लिए एक नई उम्मीद लेके आई है. और जो भी बचे हुए टाइम है आपके लिए उसमें आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ करें. कैसे आप क्यू की रिवीजन करें, कैसे आप PYQs को सॉल्व करें और कैसे मोटिवेटेड रहें. हम ये चाहते हैं कि आपने जो सपना देखा है वो आप फुलफिल करो और उसको अच्छे से अचीव करो. मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो आपको. जनरली स्टूडेंट वरीड होते हैं इस टाइम में कि कैसे हम सिलेबस को कवर करें. इतना कम समय वो टाइम बॉम्ब की तरह चलता रहता है टाइम उनके लिए. जस्ट लाइक टाइम बॉम्ब चल रहा है. तो सारे स्ट्रेटजी कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, मतलब PYQ सॉल्व करेंगे, कैसे एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे और कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ मोटिवेटेड रहेंगे. ये सब कुछ हम आपको इस क्रैश कोर्स पे बताने वाले हैं. ये 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी. और इसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आप आनंद मनी सर को ऑलरेडी जानते हैं. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया ऑफ फॉर बायोलॉजी. सो आनंद मनी सर आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं. शिखा मैम केमिस्ट्री. हमारे पास केमिस्ट्री की भी बहुत अच्छी टीम है. मैं खुद आपके लिए फिजिक्स लेके आया हूँ. विराज सर, वरुण सर, दिस ऑल आर टीम. और उम्मीद टीम आपके लिए सही में एक नई उम्मीद लेके आई है. और आप लास्ट टाइम जो बचे हुए टाइम में अपने मार्क्स को 650 प्लस कैसे लेके जाओगे ये हम आपको सिखाने वाले हैं. ओके. सो आप हमें ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस पे. एंड बचे हुए टाइम में कैसे मार्क्स को बूस्ट करते हैं वो हम वहाँ पे सीखेंगे. इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस में आपके लिए एक ऑफर भी आया है कि आप यू कैन सब्सक्राइब फॉर 45 days और इट्स प्राइस इज़ वेरी नॉमिनल. इट्स 299 ओनली. ओके. बट उम्मीद टीम आपके लिए हमेशा उम्मीद लाती है. इफ़ यू यूज़ कोड ऑफ आनंद सर, द कोड इज़ उनका नाम ही है. इट्स ANAND. जस्ट यूज़ दिस कोड और कुछ यूज़ नहीं करना है. विल गेट 20% मोर डिस्काउंट. एक तो पहले ही इतना कम है उसके बाद भी आपको 20% और डिस्काउंट मिल रहा है. दैट मीन्स
the final you will get into you will get for 239. Okay, this is the final price. So आप कैसे आपको जस्ट ज्वाइन कीजिए हमें और विल सी. गुड इवनिंग एवरीवन. सो टाइम वेस्ट नहीं करते अब हम लोग, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया. लेट्स कम टू द टॉपिक. इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. In combination of lens, what we do, we just use different thin lenses. Suppose more than one thin lens हम लेते हैं, like 2, 3, 4, 5, कितने भी thin lens ले सकते हैं. When we combine them, they behave like a single lens. Actually वो multiple है, but you can assume that they are of a single lens. और उसका focal length हमें equivalent focal length find करना होता है इस topic में. How we find वो हम देखते हैं. So let's see. I'm just taking दो ही लेते हैं तो हमें उससे आइडिया लग जाएगा. I'm taking two thin lenses. Why it's मैं बार बार कह रहा हूँ thin lenses because in case of thick lens chromatic aberration होता है. And what is chromatic aberration? We'll see the theoretical part of this. इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है वो. So just take two thin lenses. Okay, this is a principal axis. एक ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर. दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. ओ फर्स्ट क्या होगा, इट विल गो देयर, it will refract first here and make a intermediate image, it's I1, and again it will reflect and finally it will make a image I. Okay, suppose this is your U, ये U है, this is your V, and this one intermediate image is V1, this length is V1. ये हमारा लेंस है. सो हम क्या करते हैं, 1 by 1 दोनों लेंस पे अप्लाई करते हैं द फॉर्मूला फॉर लेंस. लेंस फॉर्मूला आपको पता है, इट्स 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u. ये डिराइव करने के लिए नहीं आता ऑलरेडी, ये 10th में आ चुका है, तो इसका डेरिवेशन यहाँ पर नहीं आता हमारे लिए. सो लेट्स सी कैसे हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मूला को. यूजिंग using lens formula. Suppose this is your mirror 1 and this is your mirror 2. Okay, so this is your lens formula. Now let's see. For in first case, for lens 1, I'll use 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Its focal length, the focal length of first is f1 and the second one is f2. Okay, so I'll write 1 by v1, image is v1, I am not using the sign. Okay, 1 by v1 minus 1 by u is equal to 1 by f1 first, and for lens 1 के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ. फॉर लेंस 2 द सेम इज इमेज इज 1 by v, 1 by v माइनस 1 by, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है, दो इंटरमीडिएट इमेज है, इट बिहेव्स लाइक दिस वन. ये एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है फॉर द लेंस 2. लेंस 2 पे ये जो रे आप देख रहे हो ना, इट बिकम्स अ इंसिडेंट रे, बट लेंस 1 के लिए वो रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन लेंस 2 के लिए वो इंसिडेंट रे है. दैट्स वाई I1 एक ऑब्जेक्ट, एक्चुअली वो इमेज है, बट हमें ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑप्टिकल डिवाइस पे डिपेंड करता है, किस ऑप्टिकल डिवाइस को आप ले रहे हो. फॉर ऑप्टिकल डिवाइस 1 मीन्स लेंस 1, O इज योर ऑब्जेक्ट क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे हमें बता रहा है कि ये इमेज यहाँ बना रहा है. तो इसके लिए I1 एक इमेज है लेंस 1 के लिए.
बट फॉर लेंस 2 दिस इज द इंसिडेंट रे, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो जाता है लेंस 2 के लिए, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टर रे, दिस इज द रिफ्रैक्टर रे, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ, ये इमेज हो जाता है एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट. सो आई विल यूज 1 by v is the image minus 1 by, it's a v1 is equal to 1 by f2 second. When we add both, okay, let's add both, adding 1 and 2, adding equation 1 and 2 will have, अगर आप ऐड करते हो तो v1 and 1 by v1 this one प्लस एंड दिस वन इज माइनस, दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल हैव 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, and this is we can write 1 by f equivalent. मतलब दोनों को रिप्लेस करके, दोनों लेंस को अगर हमने रिप्लेस करके एक सिंगल लेंस अगर हमें लेना है तो उसका हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोल सकते, दैट इज 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. This is the equivalent focal length. So in combination of lens we calculate equivalent focal length in this way, and similarly we can find equivalent power of lenses. P equivalent is P1 plus P2 and so on, we can also use. So just I am using for two lenses only, so हम इस तरह से यूज करने वाले हैं. दो से ही हम समझ जा रहे हैं कि हमें क्या करना है. या गुड इवनिंग एवरीवन. लगता है तुम लोग लेट से जग रहे हो आजकल. दोपहर में भी सब सोया रहता है आजकल. स्टूडेंट का ये दिक्कत है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपको सोने से मतलब है. चलो हमने ये पोर्शन देख लिया. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. सो एक प्रॉब्लम है, सो विल डू दिस प्रॉब्लम. इट्स फ्रॉम एनसीईआरटी. एक अच्छा ही प्रॉब्लम है ये, हाउ वी यूज. यहाँ पे देखो, दिस इन दिस क्वेश्चन lenses are not in contact. आप ध्यान से देखो, you have the lenses are in contact, okay, that's why. तो यहाँ पे आप दोनों लेंस को हटा के एक सिंगल लेंस बना सकते हो. But when you have lenses which are not in contact, they are separated by some distance. जैसे first one यहाँ पे आप देख सकते हो, first one is separated by second by 5 centimeter, और दूसरा और तीसरा दोनों 10 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला वन टाइम फॉर फर्स्ट लेंस, सेकेंड टाइम फॉर सेकेंड लेंस एंड थर्ड टाइम फॉर थर्ड लेंस. तो ये फॉर्मूला हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. सो क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, पहले इसको भी तो समझ लें. फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज formed by the lens combination final. तो ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर पे है. देन इट विल मेक अ फर्स्ट इमेज. सो आई एम जस्ट मार्किंग one for this, second, third. First is a convex lens, सेकेंड वन इज प्लानो कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव बोल सकते हैं हम इसको. फोकल लेंथ गिवन है डायरेक्टली में. एंड थर्ड वन इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स लेंस. सो लेट्स अप्लाई यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस वन. फॉर लेंस वन, u is I am taking this side positive plus x and this side plus y. So just take it like this. U is minus 30 centimeter
f for a convex lens is plus 10 centimeter. Just find v1 first. Okay, so v1 is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. That means 1 by v is equal to 1 by u. U is minus 30 and plus 1 by 10. From here I'll get 1 by v as I'm taking 30 LCM, so I'll get minus 1 and plus 3. Okay, so ये वैल्यू आ जाएगा minus 2 by 30, so minus 1 by 15. So v is minus 15 centimeter. So in first case ये क्या हो रहा है कि minus 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब है is it minus 15 is u minus 1, sorry minus नहीं होगा ना, it's my mistake, it's 15 सेंटीमीटर. How can I use 15 सेंटीमीटर का मतलब है कि फर्स्ट इमेज फॉर्म्स लाइक दिस, ये ऐसे जाएगा एंड कुछ ऐसा यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर पे I1 बन रहा है. बट दिस I1 बिहेव्स लाइक, मैंने बताया था फॉर द सेकेंड लेंस दिस I1 बिकम्स ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे जब ये जा रहा है, नाउ फॉर लेंस 2 दिस डिस्टेंस दैट यू कैन सी, ये ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर गैप है इसके बीच. दैट मीन्स ये 10 सेंटीमीटर है और इसका माइनस 10 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ ही है. दैट मीन्स यू नो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था व्हेन इंसिडेंट लाइट फॉल्स ऑन द फोकस पे होता है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन it becomes parallel, okay, to the principal axis. So for this ये पैरेलल हो जाएगा. इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, विल गेट द सेम आंसर. और यू कैन राइट एज अ स्टेटमेंट फॉर लेंस 2 ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस, hence its image forms at infinity. Means ये parallel हो जाएगा. Now I am coming to the third lens. For lens 3 you have u at infinity पे you have f and just try to find. और तुम्हें पता है कि जब भी u infinity पे हो तो फाइनल इमेज फोकस पे बनता है. दैट मीन्स इट विल गो लाइक दिस एंड फाइनल इमेज फॉर्म्स एट 30 सेंटीमीटर. ओके, एंड यू कैन राइट एज अ स्टेटमेंट, और आप सॉल्व करके भी देख सकते हो. फॉर लेंस 3 ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, hence its image forms at focus. Means 30 सेंटीमीटर. कितने डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहे हैं? if I am taking this so 30 centimeter right of the lens 3, you can say 30 centimeter right of lens, sorry it's not visible to you, right of lens 3. एक काम करता हूँ, I will be not this one, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा. Okay,
So I have inserted more pages so that now I am coming to prism. Okay, it's a very important topic and हम क्या पढ़ने वाले हैं? It's a refraction through prism. There are some important terms जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. This angle is called angle of prism or refracting angle. Okay. These two surfaces, it's called base. These two surfaces, I can write it separately. AB and BC are called matte surfaces. Refraction इसी के थ्रू होता है, इसलिए इसको बोलते हैं matte surfaces. It's not clearly. Okay. Now, this is IE. This is angle of incidence. It's angle of emergence. This one you can see, this del is actually giving you, ये आपको तो PQ जो इंसिडेंट रे है और RS, दिस वन PQ और RS, ये जो दो रेज हैं उनके बीच के एंगल को बता रहा है. दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन. इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन और यही फाइंड करते हैं मेनली इसमें हम लोग. ओके, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. सो कुछ चीजें हम यहाँ समझ लेते हैं और कुछ डेरिवेशंस भी कर लेते हैं. फर्स्ट डेरिवेशन इज, मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ. मेक अ कॉपी ऑफ दिस. ओके, नाउ इन ट्राइंगल ए, दिस एंगल, फर्स्ट मैं ये मार्क कर देता हूँ. This angle and this angle. This angle is I minus R1, okay? And this angle is I minus R2. Sorry, E minus R2, not I. It's E minus R2. Okay? Now, in triangle ए क्यू आर, इस ट्राइंगल में बोल सकते हैं एंगल नॉट ए क्यू आर, इट्स इन रेक्टेंगल और इन रेक्टेंगल ए क्यू एन एंड आर. हमें पता है कि ये एंगल देख सकते हो आप, ये एंगल दोनों 90 डिग्री है. सो आई कैन पुट एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 90 एंड 90 है. सो टोटल एंगल अगर हम ऐड करें 360 होता है. सो दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन. और इन ट्राइंगल ए, सॉरी, इन ट्राइंगल क्यू आर एंड एन, ये ट्राइंगल में यू कैन राइट R1 plus R2
प्लस एंगल N1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर ले या फिर n की वैल्यू पुट कर दें, सो यूजिंग 1 and 2 दोनों को यूज करते हुए आई कैन पुट एंगल A प्लस एंगल N इज 180 माइनस R1 माइनस R2 is equal to 180 degree. This is cancel out. So angle A is equal to R1 plus R2. दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, दिस इज वन। और एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप देखो इस ट्राइंगल में, दिस इज डेल, ये समेशन ऑफ दिस टू एंगल के बराबर है। So angle of deviation I can put angle of deviation del is summation of this two. Okay, so I can put I minus R1 plus E minus R2, I minus R1 plus E minus R2। इससे हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं, एंड विच इज इक्वल टू I plus E minus R1 plus R2, and R1 plus R2 is A, so deviation angle is I plus E minus A. This is one of the formula. I am putting it 3, 1 और 2 हमने देख लिया, इसको 3 करते हैं, this is your third and this one is your fourth. One more thing, we can use Snell's law also. Using Snell's law, 1 into or sin I is equal to mu into sin R1 हो जाएगा, it's equation A, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ mu into sin R2 for here mu into sin R2 is equal to this one is equal to E, मतलब 1 into E sin A. This is equation B. Now what we'll do, there is a case of minimum deviation. जब आप when you make this this relation, okay, we'll see that if you see the deviation angle is function of, or is it's dependent on एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि E अगर आप देखो यहाँ पर तो E R2 पे डिपेंड करता है एंड R2 भी R1 पे, यू कैन पुट R2 एज A माइनस R1 एंड R1 I पे डिपेंड करता है। तो फाइनली अगर आप देखो तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। सो वी कैन से डेविएशन एंगल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब इसका ग्राफ हम पुट करते हैं, दैट मीन्स इसका ग्राफ अब बनाओ, दिस इज incident angle and its deviation.
So graph is something like this. Okay. You will see there is a value. This is a del minimum, and this happens when here when I becomes equal to E. Okay, this is called condition for minimum deviation, or we'll see what is the value of minimum deviation, but the minimum deviation is observed when angle of incidence is equal to angle of emergence. Okay, so in case of minimum deviation, ray inside prism becomes parallel to base. Okay, ray inside prism becomes parallel to base. That means R1 becomes equal to R2 also is equal to R. अगर पैरेलल हो जा रहा है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि R1 और R2 यहाँ आप देख सकते हो, अगर ये पैरेलल हो जा रहा है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. ओके, और ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, so we can say A is equal to R1 plus R2 is equal to 2R. So यहाँ से R का वैल्यू में A/2 मिलेगा. ओके, एंड डेविएशन मिनिमम वी कैन राइट इज 2I. I प्लस E होता है ना, उस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं. I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू 2I माइनस A. ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है. यूजिंग दिस इक्वेशन, स्नेल्स लॉ, ये इक्वेशन हम यूज़ करें तो वी कैन फाइंड द रिलेशन यूजिंग स्नेल्स लॉ. That is sin I is equal to mu times sin R1. तो यहाँ से I का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ. इट्स डेल मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2. जस्ट पुट दिस साइन ऑफ डेल मीन प्लस A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन R1. R1 इज A बाई 2. ये हमें मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है. ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन. सो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैलकुलेट दिस मिनिमम डेविएशन. तो ये डेविएशन केस स्टडी में आने के चांसेस है. ओके, केस स्टडी में आपको ये प्रिज्म पूछ सकता है CBSE में इस बार. सो आप इसके डेरिवेशंस को आप अच्छे से देख लो कि कैसे डेराइव मैंने किया, सारे प्रॉपर्टीज मैंने बताए, ये सारे आपको केस स्टडी में आने के चांसेस है. ओके, सो आप इसको अच्छे से कर लेना एक बार, और एक बार NCERT को भी आप थोड़ी रीड कर लेना. अब क्या कर रहे हैं हम, कुछ पॉइंट पे जा रहे हैं. मीन्स इट्स अ थ्योरेटिकल पोर्शन, सो डायरेक्ट हम NCERT के पॉइंट्स को हमने पिक किया है और इट्स NCERT, और इस पॉइंट को हम
पढ़ते हैं अच्छे से. ओके, सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट. ओके, क्या क्या है? ओके, सो लेट्स सी, और मैं उसको एक एक चीज़ अच्छे से समझाता हूँ. ओके, द इंटरप्ले ऑफ लाइट which things around us gives rise to several beautiful phenomena. The spectacles of colors that we see around us all the time is possible due to sunlight. ये तो सिंपल सा है. ओके, मैं सब कुछ हम जो आसपास देखते हैं वो क्यों सनलाइट के कारण पॉसिबल है. While studying dispersion of visible or white light by a prism in class 10 and the electromagnetic spectrum chapter 8 class 12, we go to know that color is associated with the frequency of light or the wavelength of light is in the given medium. Okay, मैंने बताया था कि जो कलर ऑफ द लाइट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एंड द वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ भी चेंज होता है. स्पीड भी मीडियम पे डिपेंड करता है. ओके, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, red light is at the long wavelength, means this one red light has long wavelength 700 nanometer के आसपास उसका wavelength होता है, while the violet light is at the short wavelength. violet light का जो wavelength है वो short होता है. okay, dispersion takes place because the refractive index of medium. It's talking about dispersion. okay, dispersion क्या हम समझते हैं इसमें आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ. पहले इसको पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताता हूँ क्या है. फॉर डिस्पर्शन टेक प्लेस बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, बेंडिंग ऑफ रेड कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट इज लिस्ट while it is most for the violet. Equivalently, red light is travels faster than violet light in glass prism. Gives the refractive indices for different wavelength of crown glass and flint glass. The thick lenses could be assumed as made of many prisms. Therefore, the thick lenses show chromatic aberration due to dispersion of light. When white light passes through the thick lenses, red and blue colors focus at different points. This phenomenon is called chromatic aberration. अब now हम लोग आते हैं पॉइंट की बात करते हैं. According to this, डिस्पर्शन एक फेनोमेना है जिसमें वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू या एनी ग्लास सरफेस के थ्रू अगर पास करता है, स्लैब के थ्रू अगर पास कर रहा है, तो एट इंटरफेस इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. कौन से कलर्स? विबग्योर. कलर कौन से होते हैं? इट्स विबग्योर. It's called dispersion of light. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. इसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर. So splitting of light into white light into its constituent color is called dispersion. So whenever light passes through prism, it splits into 7 colors. But ऐसा होता है क्यों है? So यहाँ पे हमें बता रहा है कि the refractive index of any medium also depends upon the wavelength of the light. किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड करता है. कॉची ने एक रिलेशन दिया था, यू कैन सी दैट म्यू ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी प्लस समथिंग दिस टाइप. अकॉर्डिंग टू दिस, अगर लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा होगा, यू विल हैव लेस म्यू इन दैट मीडियम. दैट मीन्स ये हमें बताता है कि with increase in wavelength the mu decreases. So refractive index सिर्फ speed of light in medium पे नहीं, wavelength पे भी डिपेंड करता है. For different color of light you have different refractive index of a medium. For example, mu और ज़्यादा है तो red का वैल्यू सबसे ज़्यादा, wavelength of red is सबसे ज़्यादा होता है. That's why mu is least. In visible spectrum हम बात करें तो mu of red is least, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इस वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है.
So we know that if you have a larger value of mu, that means it will have more bending angle. That's why you will see that in case of dispersion of light, let me use somewhere else. Just okay. In dispersion of light, you will see that इस तरह से स्प्लिट होता है. You will find red here. You will find red here and it's violet here. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यू वायलेट का ज़्यादा होता है इन मीडियम. दैट्स वाई वो नीचे की तरफ ज़्यादा बेंड होता है. रेड का वेवलेंथ बड़ा होने की वजह से और इन विजुअल स्पेक्ट्रम इट हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू, जिस वजह से उसकी म्यू की वैल्यू सबसे कम होती है. एंड इट्स म्यू इज लेस, दैट मीन्स उसकी बेंडिंग क्या होगी, वो भी कम होगी. सो इट्स डिस्पर्शन में ऐसा ही होता है. दिस इज द रीजन फॉर डिस्पर्शन. नाउ इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं. द वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ मे बी मोर प्रोनाउंस्ड इन सम मीडिया देन द अदर. ओके. In vacuum, of course, the speed of light is independent of wavelength. Okay, वो vacuum में speed of light wavelength पे depend नहीं करता है. Okay, thus vacuum or air approximately is a non-dispersive medium in which all colors travel with the same speed. अब ये बता रहे देखो, ऑलमोस्ट एयर और वैक्यूम में हर एक का स्पीड सेम होता है. दैट्स वाई म्यू का वैल्यू भी क्या होगा, सभी वेवलेंथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा. तो अप्रोक्सीमेटली एयर और वैक्यूम दोनों में, ये दोनों नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, इसमें डिस्पर्शन नहीं होता. व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन एयर और वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली इन एयर, इसमें डिस्पर्शन नहीं होता है. दिस ऑल्सो फॉलोज द फैक्ट दैट सनलाइट रीचेज अस इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट. इस वजह से वाइट लाइट के फॉर्म में आता है, एंड नॉट एज द इट्स कंपोनेंट फॉर्म में नहीं आता है. On the other hand, glass is a dispersive medium. Glass का एक dispersive medium है because different color of light travels with different speed. That's why it's a dispersive medium. The blue of the sky. अब समझते हैं dispersion का एक और. The blue of the sky, white clouds, the red hue at the sunrise and sunset, the rainbow, the brilliant color of some pearls, shells, wings of birds are just a few of the natural wonders we are used to. We describe some of them here from the point of view of physics. इन सबको ना हम डिस्क्राइब करते हैं. ब्लू ऑफ आई मीन्स इट्स अ स्कैटरिंग इफेक्ट. वाइट क्लाउड क्यों होता है, द रेड ह्यू है सनराइज एट द सनसेट, वैसे रेडिश क्यों दिखता है, ये सबको हम डिस्क्राइब करते हैं. साथ ही साथ रेनबो. तो सबसे पहले हम रेनबो पे आते हैं. ओके, रेनबो मैं इसमें पढ़ूंगा, बट उससे पहले बताते हैं. रेनबो एक स्पेशल केस में हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज इन बैक ऑफ मी वी हैव अ सन, इट शुड बी इन द बैक, एंड इन फ्रंट ऑफ मी यहाँ पे कहीं रेन होना चाहिए आसपास, सो दैट यू विल हैव ह्यूमिडिटी इन द एयर. ह्यूमिडिटी मीन्स यू विल हैव वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे सामने होंगे. सो राइट, द लाइट विल कम फ्रॉम द बैक and it will be reflected back to us. और वहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद डिस्पर्शन भी होता है और TIR भी होता है. जिस वजह से वाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है, एंड यू विल सी अ रेनबो, 7 कलर्स ऑफ लाइट. और रेनबो भी दो तरह का होता है. इट्स अ प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो. ये अच्छा मतलब ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं इन केस ऑफ बोर्ड 3 मार्क्स में. दे कैन आस्क यू वाटर ड्रॉप्स, जब वाटर ट्रेवल करता है 10 मिनट. ओके, देखते हैं. जब ओके, सो वाटर मॉलिक्यूल में डिस्पर्शन, जब लाइट रे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जाता है, जैसे यहाँ
सो यहाँ पे स्प्लिटिंग होता है. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ white light through the water molecule by the water molecule drops in the atmosphere. This is a phenomenon due to combined effect of dispersion, refraction and reflection of sunlight by spherical water droplets in. यहाँ पे dispersion भी होता है, refraction भी होता है और reflection भी होता है. ये combined phenomenon है. The condition for observing a rainbow are that sun should be shining in one part of the sky. I told you the before, say near western zone, while it is raining in the opposite part of the in front of me, say eastern zone. An observer can therefore see a rainbow only when his back is towards the sun. सन यहाँ है पीछे की तरफ और सामने तब तुम रेनबो देख सकते हो. मैंने बताया था. In order to understand the formation of rainbows, consider this is the figure. Okay, this two are figure. Okay, we'll see that. Understand the formation of rainbow. Consider figure. Sunlight is first refracted as it enters a raindrop, which causes the different wavelengths colors of the white light to separate. Longer wavelength of light red are bent at the least, while the shorter wavelength violet are bent the most. Next, this component rays strike the inner surface of the water drop and get internally reflected if the angle between the refracted ray and normal to the drop surface is greater than the critical angle 45 degree 48 degree. That means after refraction here it goes and here you will see it's a TIR. So this angle it's making with the normal, if it's more than 48 degree, अगर ये 48 degree से ज़्यादा हुआ, so we will find a TIR. क्योंकि हमने critical angle पढ़ा. So critical angle में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर angle of incidence more than the critical angle है, so in that case we will see a TIR, total internal reflection. So यहाँ पे TIR हम ऑब्जर्व करेंगे. The reflected light is refracted again when it comes out of the drop. जो refracted जो light है वो वापस आ जाएगा फिर से. The reflected light is refracted again when it comes out of the drop. Yeah, आप देख सकते हो फिर refract होगा. The refracted light as shown in the figure, it is found that the violet light emerges at an angle of 40 degree related to its incoming sunlight, and red light emerges at an angle of 42 degrees. Okay. For other colors, angles lie in between these two values. आप ये एंगल दे सकते हो. ये एंगल जो है ना, this one, तो this one is red. यहाँ पे color inverted है, so that's why this one is red. This one is red. Okay, and this one is violet. This one is red and this one is violet. Okay. For other colors, angles lie between them. So we will see that other colors lie between them. It's saying that. Okay. So अब हमें समझना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी. ओके, क्या होता है रेनबो. Figure 9.25b explains the formation of primary. This B, okay. Primary rainbow, we see the red light from drop 1 and violet light from the drop 2 reaches the observer. Drop 1 or drop 2, okay. So this one, the below one, is your red light. देख रहे हो आप नीचे red light है. This is your red light and this is your violet light. So violet light, then your red light. ऐसा कुछ sequence बनता है. Observer side, the violet from the drop 1 and the red from the drop 2 are directed at level above the below. Okay, you can see here. Thus the observer sees a rainbow with red color on the top. You will see red color top and violet in the bottom. So this is called primary rainbow.
The primary rainbow is a result of three-step process: refraction, reflection, and refraction. Refraction, reflection, and refraction. It's called primary rainbow. एक secondary rainbow होता है. इसमें क्या होता है? We'll see that. Here you will have, for example, light is coming. You will have a refraction, reflection, reflection, and reflection. So here you will see that the red color ऊपर होता है, violet नीचे, and red नीचे. So violet will be top and red will be at bottom. So this is called secondary rainbow. And secondary rainbow is a four-step process: refraction, reflection, reflection, and refraction. This is a secondary rainbow. Now, scattering of light. Okay, it's very important. What we actually study in scattering of light. Scattering of light is very much important. Because of this, the scattering of light, the blue color of sky. Sky is not actually blue. We see it blue because of scattering of light. When light travels, the sunlight travels through the atmosphere. It falls on different atmospheric particles and get scattered. Scattered means it is absorbed and instantly it will be emitted. So scattering depends upon the wavelength. So let's see what it's written and I'll make you understand. The sunlight travels through the Earth's atmosphere. It gets scattered, changes its direction by the atmospheric particles. It's called a scattering. Light of shorter wavelengths is scattered much more than the light of longer wavelengths. I told you, वो फैल जाता है लाइट. तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है लाइक वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा एंड लॉन्गर मीन्स रेड का सबसे कम होगा. बट हमें ब्लू क्यों दिखता है? उसका रीज़न यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है. Wavelength is scattered much more. The amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength. ये आपको याद रखना है, fourth power of wavelength, or it's inversely proportional to that. This is known as Rayleigh scattering. Rayleigh scattering constant is this. Hence, the bluish color predominates in a clear sky, since blue has a shorter wavelength than red and is scattered much more strongly. In fact, violet gets scattered even more than blue, having a shorter wavelength. But since our eyes are more sensitive to blue than violet, we see the blue sky. So there are two things. Violet color is scattered most. अगर तुमसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में वायलेट का ज़्यादा स्कैटरिंग होता है ब्लू का, तो तुम कहोगे ब्लू क्योंकि तुम्हें ब्लू दिखता है, बट ऐसा है नहीं. इन साइंटिफिक इट्स अ वेरी फैक्चुअल थिंग दैट ब्लू वायलेट कलर गेट्स स्कैटर्ड मोस्ट, बट वी सी द ब्लू कलर ऑफ स्काई बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ आवर आई. हमारा आई जो है ना ब्लू कलर के लिए मोस्ट सेंसिटिव है, दैट्स वाई वी सी द ब्लू कलर ऑफ स्काई. नाउ larger particles like dust and water droplets present in the atmosphere behave differently. The relevant quantity here is the relative size of the wavelength of light lambda. The scatterer or typical size say alpha. Alpha is less than very less than lambda. This is one has Rayleigh scattering which is proportional to 1 by lambda to the power 4 जो भी लिखा हुआ था अभी. For A very large than lambda, अगर particle size lambda से बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, large scattering objects, for example raindrops, large dust or ice particles, this is not true. All wavelengths are scattered nearly equally. Thus clouds which have droplets of water with A very greater than lambda are generally white. हमें ब्लू भी नजर आता है बट वो वाइट है. नाउ व्हाई वी सी द ब्लूइश द रेडिश एट द सनसेट और सनराइज, वी सी reddish color of the sunlight. Why? What happens during sunset or sunrise?
for example, in the sun near the horizon, you can take a sunset or sunrise both. Here you will see that when it is over it, here the distance which is traveled inside the atmosphere by the sunlight बहुत कम होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है, जिस वजह से स्कैटरिंग कम होता है। और स्कैटरिंग कम होता है तो उसमें रेडिस नहीं। लेकिन जब ये होराइजन के पास है तो होराइजन के पास ये बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यू कैन सी दिस डिस्टेंस। और यहाँ तो यहाँ पे जो मेन कलर्स है, जो वेवलेंथ जिसके छोटे हैं जैसे वायलेट, ये सारे स्कैटर्ड हो जाते हैं। एंड द लाइट विच रीचेस टू योर आई वो बचता है रेड। बाकी सारे कलर क्या हो गए, स्कैटर हो गए, और रेड सबसे कम हुआ, तो जिस वजह से आई पे जो लाइट फॉल हो रहा सिर्फ रेड बचता है, जिस वजह से सन हमें रेडिश नजर आता है। दैट इज द रीजन फॉर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एवरीवन। ओके, हमने दो पार्ट में रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म पार्ट और उसके रिलेटेड रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन और नेचुरल फिनोमेना को कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने आज देख लिया। या इट्स अ लाइव लेक्चर, सो नाउ इट्स अबाउट टू ओवर, यू कैन सी द रिकॉर्डेड वन। सो दिस लेक्चर नोट्स विल गेट ऑन, हमें कहाँ मिलेगा, t.me आनंद मनी 001। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले और यू विल गेट द लेक्चर नोट्स। और अच्छे से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम बहुत ही ना पास है। केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, बीच में साथ इंग्लिश भी आ रहा है। सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड्स एग्जाम है, नीट एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, सब कुछ पास ही है। पूरा एफर्ट लगा दो, बाद में कभी ये अफसोस ना हो कि जो टाइम था उस समय हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया। कम से कम अपने आप पे ये फेथ तो होगा कि मैंने अपना 100% दिया था। अब नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, बट ऐसा आपको नहीं होने के बाद भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बस हमेशा 100% देने का आदत आपके पास होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लाइटली लेना है, करियर से रिलेटेड चीज़ों को। और आप अच्छे से पढ़िए। दैट्स फॉर थर्ड में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।